As we have discussed earlier, living things and non-living things. Now, here comes habitat. What is habitat? A place where an organism naturally lives or reproduce. हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म पहले से रह रहा होता है या फिर वो वहाँ पे अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करता है. डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स में शेयर द सेम हैबिटेट. कई एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, वो सेम हैबिटेट में रह लेते हैं. वो अपना फूड शेल्टर शेयर करते हैं. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिविंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो कौन से हैबिटेट में आते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो दैट कम्स अंडर एक्वेटिक हैबिटेट. नाउ वी विल discuss about the components. Habitat having two components that are living and non-living components. The living components are called biotic components. Biotic means bio or that comes to living organisms, and the non-living components are called abiotic components. Now we will discuss biotic components. Biotic components comes under living organisms like plants, animals, microorganisms. They all make up the biotic components. Now first we will discuss plants. Here shows parts for plants are roots, stem, leaves and flower. Now green plants prepare their food using sunlight, chlorophyll, that is the green color pigment present in leaves, water and carbon dioxide. When sunlight falls on the leaves, जब सनलाइट लीव्स पे फॉल होती है तो वो क्या करती है, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट जो है लीव्स में वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है. और वो उससे क्या होता है, प्लांट सॉइल में हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं. ठीक है. नाउ सॉइल क्या करेगा, रूट की हेल्प से वाटर और मिनरल्स विल गो अपवर्ड and carbon dioxide from the air to make their food. Now this process is photosynthesis. So when plants prepare their food using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll, they give glucose, oxygen that we breathe in and some energy. The food that plant stores is in the form of starch, and the food stored in plant part, that is leaf. Plant gives us oxygen that we breathe in and we breathe out carbon dioxide gas that plants takes in for the process of photosynthesis. So plants are also called producers. Why these are called producers? As they gives us oxygen and carbon dioxide, and they also produce some eatable products like fruits, vegetables. Now we will discuss about animals. Animals also come under biotic components as they are living organisms. So animal also feed on plants for their food or other animals for energy. They get nutrition from different part of plant or animal product they eat. वो उनसे क्या मिलते हैं, उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है या फिर न्यूट्रिशन मिलते हैं जो जिन्हें वो खाते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सोर्स को खाते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को फीड करते हैं, दैट आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. दैट आर स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स के रिमेन्स को खाते हैं, दैट आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. एंड द डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, प्रेजेंट होते हैं ये. वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जब डेड एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है. सो स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर द एनिमल्स दैट क्लीन आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम फाउल स्मेल. So these are the biotic components as we have discussed here. Now we will discuss about abiotic component. Abiotic components comes under non-livings, means the things that are natural as soil, light, air and water.
Now, firstly, we will discuss about light. As we have discussed in biotic components that plants prepare their food using sunlight. So, plants use light to make their food that is consumed by animals including human beings. और लाइट क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमारे बॉडी को वार्म रखती है. नेक्स्ट इज एयर. एज एयर हैविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सर्वाइवल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ब्रीद इन करने के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीद आउट दैट इज यूज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis to prepare the food for the plants. Next is water. Water is very essential for survival of living things. Plant use water. Plant water को कब use करते हैं, during the process of photosynthesis, and human beings and animal use water to perform most of their activities for body functions like to do physical activities. Now water having also oxygen and carbon dioxide इन डिजॉल्व फॉर्म मिक्स हुई होती हैं दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में. नेक्स्ट इज फिश. फिश क्या करती है, फिश स्विम इन वाटर बिकॉज फिश हैव गिल्स. गिल्स हेल्प्स फिश टू स्विम इन वाटर. सो वाटर हेल्प्स एनिमल लाइक फिश टू सर्वाइव इन वाटर. नेक्स्ट इज सॉइल. नाउ व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज सॉइल. नाउ जब बहुत रॉक्स क्या करती हैं, जब रॉक्स ब्रोक डाउन हो जाती हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में तो वो क्या फॉर्म कर लेती हैं, सॉइल फॉर्म कर लेती हैं. नाउ व्हाट सॉइल प्रोवाइड्स अस, इट प्रोवाइड्स so many conditions for the living things as it retain moisture, it supply nutrients and most importantly soil क्या करती है, ये प्लांट्स की रूट्स को बाइंड करती है ताकि प्लांट will not be able to come out from the soil and we get proper oxygen supply for our survival. Now here is a picture that shows that how biotic and abiotic components are interact with each other. As we all are dependent on plants or plant also depend on us for their survival. Now we get carbon dioxide from air and give it to the plant for the process of photosynthesis. So carbon dioxide is utilized and oxygen is given out by the process of photosynthesis. Now sunlight is utilized by all living organisms. Sunlight क्या सब सारे organisms utilize करते हैं sunlight. Air is also required by all the living organisms to survive. So this diagram shows the interaction between biotic and abiotic components as both living and non-living things are interdependent with each other. This shows that either living or non-living things are not self-dependent but they depend on each other. That's all for this chapter. Thank you.